ओके गाइस, जो आज हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है एंड इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस प्रॉब्लम अगर आप जेईई एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। तो हमारे पास क्या दिया गया है, हमारे पास एक बीड दिया गया है जिसका मास m है, विच कैन स्लाइड ऑन अ वायर, स्मूथ हॉरिजॉन्टल वायर, यानी कि इधर फ्रिक्शन कोई नहीं है। ये जो हमारा ये बीड है दिस कैन स्लाइड ऑन दिस वायर, और एक पार्टिकल है ऑफ मास 2m जिसको बीड के साथ कनेक्ट किया गया है बाय सम स्ट्रिंग, लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l, यानी कि इसका मास कुछ नहीं है। सो और इनिशियली द सिचुएशन इज इन दिस फॉर्म, यानी कि दिस मास को हॉरिजॉन्टली हेल्ड अप किया गया है बाय सम, चाहे हाथ से पकड़ा है या किसी तरीके से पकड़ा। दिस इज आवर इनिशियल सिचुएशन। तो क्वेश्चन हमसे पूछता है कि जब हम इसको छोड़ेंगे, यानी इधर रिलीज करेंगे इस मास को, इट विल नेचुरली फॉल डाउन, फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट होगा तो ये नीचे की ओर आ जाएगा। उसकी वजह से हमें बताना है कि जो स्ट्रिंग में टेंशन पैदा होगा, बिकॉज व्हेन इट विल कम डाउन तो स्ट्रिंग में नेचुरल टेंशन पैदा होगा, तो हमें बताना है कि वो टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ थीटा क्या है, यानी टेंशन जो इस स्ट्रिंग में वेरी हो रहा है वो थीटा के साथ कैसे वेरी हो रहा है, वो रिलेशनशिप हमें निकालना है। दैट इज दैट इक्वेशन और दैट फंक्शन वी हैव टू डेवलप। देखिए इनिशियली दिस इज हेल्ड इन लाइक दिस, तो ये सिचुएशन हमें ये दिया गया है। तो यहाँ पे जो mg फोर्स पड़ रहा है दैट इज बैलेंस्ड बाय, जब ये स्ट्रिंग के साथ पड़ेगा तो नॉर्मल फोर्स स्ट्रिंग देगा, तो देयर विल बी नो वर्टिकल मोशन ऑफ दिस बीड। Partially horizontal motion है नहीं, because there is no horizontal force acting in this direction, right? तो इसी तरीके से ये जो ये पार्टिकल है ये भी हेल्ड किया गया है so that its weight is balanced by that force। जब इसको काटा गया है तो its weight, यानी कि the force of gravity is now not balanced, it will start falling। When it start falling there will be a tension, और जब tension string में होगा there will be one component of tension in this direction and one component of tension in this direction। तो सिचुएशन ये है at some theta। तो हम देखेंगे कि जो ये बीड है, यहाँ मैंने लिखा भी, आप देख सकते हैं डिटेल्ड राइटिंग में है, तो ये बीड नीचे की ओर नहीं आ जाएगा, बिकॉज इसका जो ये फोर्स कंपोनेंट, इसका mg प्लस t साइन थीटा जो टेंशन का कंपोनेंट है, जो इसको नीचे लाना चाहता है वर्टिकली, दैट विल बी बैलेंस्ड बाय द नॉर्मल डायरेक्शन गिवन बाय द स्ट्रिंग जिस पे ये स्लाइड कर रहा है। सो फॉर बीड देयर विल बी नो वर्टिकल मोशन, बट यहाँ पे देखिए इट हैज अ वन कंपोनेंट ऑफ टेंशन दैट इज t cos थीटा। एट सम सिचुएशन एट सम थीटा वी आर सीइंग इट। सो बीड की टेंडेंसी है कि इधर की ओर मूव हो जाए। तो हम देख रहे हैं कि बीड जो, जब हम ग्राउंड फ्रेम में देखेंगे तो हम देखेंगे बीड हॉरिजॉन्टली मूव करेगा, नॉट वर्टिकली। दिस इज वन ऑफ द थिंग्स व्हिच वी ऑब्जर्व। तो हमेशा इन केसेस में मोशन को ऑब्जर्व करना चाहिए। लेकिन फॉर दिस पार्टिकल ऑफ मास 2m, इधर force due to gravity भी है, that is in the downward direction, that will be 2mg, and there will be tension in this direction। तो टेंशन का एक कंपोनेंट इसको हॉरिजॉन्टली भी मूव करेगा और there will be vertical component of tension in this direction। तो अगर हम देखेंगे कि this t cos theta will tend to move it in the horizontal direction, और ये force of gravity will move it in the downward direction। तो नेचुरली अगर हम इस पार्टिकल की मोशन फ्रॉम द ग्राउंड फ्रेम देखना चाहे तो इट हैज गॉट टू मोशंस, वन इज द हॉरिजॉन्टल मोशन एंड अनदर इज अ डाउनवर्ड मोशन। तो इन केसेस में जब मोशन इसका तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल है, इट इज वेरी इजी टू एनालाइज फ्रॉम द ग्राउंड फ्रेम। तो हम t cos थीटा को ma के साथ इक्वेट करके इसका एक्सेलरेशन इन द x डायरेक्शन निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें दो मोशंस है, सो इसका एक्सेलरेशन it will be somewhere in this direction, because ये नीचे भी आ रहा है, ये इधर भी जा रहा है। so this ऐसी मोशन को अगर हम देखें from the ground frame, it is very difficult to analyze। तो ऐसी सिचुएशन में हम देखना चाहें कि कहीं कोई फ्रेम ऐसा तो नहीं है, let it be the center of mass frame, और दूसरे पार्टिकल के फ्रेम में अगर हम जाए तो हमें मोशन एक सिंपल मोशन ना दिखे। अगर हमें वो सिंपल मोशन दिखेगी तो हम उस फ्रेम में इसको एनालाइज करके वापस ग्राउंड फ्रेम में आ सकते हैं। दैट शुड बी आवर एम while solving these questions। तो अगर हम इस फ्रेम में देखेंगे, when we go into the frame of bead, तो हम क्या देखते हैं
कि this length is always constant, यानी कि distance of this particle from the bead remains always fixed by the string length, right? तो जब ऐसी सिचुएशन हो, एक पार्टिकल की दूसरे पार्टिकल तक डिस्टेंस फिक्स्ड रहे और अगर दूसरा पार्टिकल एग्जीक्यूट मोशन कर रहा है, इट्स पोजीशन चेंज हो रही है विद रेस्पेक्ट, इट विल बी ऑलवेज इन सर्कुलर मोशन। जब देखो कि ये पार्टिकल है और ये पार्टिकल, इनका डिस्टेंस अगर फिक्स्ड रहेगा, आइदर दे आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी इन द सेम डायरेक्शन, और ये एक दूसरे के ये मूव नहीं कर रहे हैं एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, दे आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी और दे आर एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू सम फ्रेम, और अगर ये मूव कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू द अदर बॉडी, तो ये हमेशा सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करेगा बिकॉज इसका जो डिस्टेंस है वो फिक्स्ड है। सो इस चीज का एडवांटेज लेके हम इस फ्रेम में जाके इसका मोशन चूंकि प्योर सर्कुलर है, इसलिए हम इसको वहां से एनालाइज करेंगे। ओके, चलते हैं आगे। तो so to make the situation easy, we observe the motion of the particle 2m in the frame of bead. Because distance between m and 2m particle is fixed by string length, so motion observed from bead will always be circular. So अब circular motion में let us give, जो हम observe कर रहे हैं motion from the frame of bead from the particle of mass m, let us say that it is moving with some velocity. Since it is a circular motion, we know that it is executing a circular motion. This velocity will always be perpendicular to the line joining these two particles. Any string, जो string length है इस पे perpendicular हो, that means this angle will be 90 degree. But लेकिन एक चीज आप याद रखिए, so we will write a equation of motion for force की equation हम इस फ्रेम में लिखेंगे, लेकिन हमें पता है कि when we move from one frame to another frame, हम इस फ्रेम में गए तो पहले हमें देखना है कि ये फ्रेम कहीं तो इनर्शियल है या नॉन इनर्शियल है। अगर ये इनर्शियल होगा, we don't need to introduce pseudo forces. अगर ये नॉन इनर्शियल है तो हमें pseudo force इस फ्रेम में pseudo force यहाँ पे इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी। तो देखिए ये फ्रेम नॉन इनर्शियल है बिकॉज देयर इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन इन दिस डायरेक्शन t cos थीटा एंड इट विल बी एक्सेलरेटिंग दिस स्पीड m। सो उसका एक्सेलरेशन जो इस डायरेक्शन में होगा वो होगा t cos थीटा डिवाइडेड बाय m। और जब हम मोशन को इसके फ्रेम से एनालाइज करेंगे तो हमें यहाँ पे एक सूडो फोर्स देना पड़ेगा, that will be the acceleration of the inertial frame multiplied by the mass. So acceleration, this is t cos theta by m in that direction, opposite में देना पड़ेगा into the mass. तो हमने मास जो है हमारा पार्टिकल का 2m, तो हमारे पास इस सूडो फोर्स आ गया कितना, सूडो फोर्स comes out to be 2t cos theta। ठीक है जी, तो हम यहाँ डायनेमिक्स इक्वेशन लिखेंगे, फोर्स इक्वेशन लिखेंगे। देखिए m 2mg फोर्स नीचे है, तो दिस इज we write it along the circular motion, जहाँ along the radius हम इन forces को equate करेंगे। So t is there plus 2t and this is theta angle, so there will be 2t cos theta cos square theta in this direction, and mg का जो ये होगा component opposing along this string, that will be 2mg sin theta। अगर आप देखेंगे this is 90, this is theta, this will be 90 minus theta, तो यहाँ पे ये 90 है in this direction, so these are 90, so this is v, so this will be this mg is in this direction, this will be theta, so this will be 2mg sin theta, right? So इसको हम subtract करेंगे, then we will equate it to what we have assumed, this will be equal to the centripetal force, this. So if you look at this equation, we can get, तो हमें t का function, t as a function of theta मिल सकता है if we know this v square, correct? So we have to get this v square from somewhere as in terms of m, g, l and theta, which are our parameters, right? तो चलते हैं। Now you see, let us go back into the ground frame. In ground frame, we know our particle is moving, this bead is moving horizontally because there is a t cos theta acting in this direction, so it will move horizontally. There is no vertical motion. Let us assume that its velocity is u in the ground frame, that will be in this direction. And we know what is the velocity of this particle mass 2m in the ground frame.
in this frame, we know its velocity is v, correct? We know its velocity is v in the frame of bead, and u is the velocity of bead in the ground frame. So if we add these two velocities, this v and u, we get the velocity of this particle in the ground frame. But we don't know the angle, we don't know u, and we don't know v as such. But we want to get v in some terms. So first thing is, now we have another variable u here. So हमारे पास एक और variable, sorry, we have another variable u here. Okay, so we want to convert this u into v. And we know that since there is no horizontal force, the only force acting is the force due to gravity. There is no horizontal force acting on the system. If you look in the ground frame, so its momentum, which was before 0, will be net momentum will remain conserved. So its net momentum should be 0 always. So we will conserve the momentum in the horizontal direction. So it is mu here in the plus x, 2mu in the plus x for this particle, because we know that now this is the velocity in its ground frame, v plus u, correct? V is the velocity in the frame of bead, u is its own velocity if we add this. So, but we know that this is the only component of the velocity of this particle in the horizontal direction, right? So we can have its momentum in the horizontal direction with 2mu. And we will have the component of v in the horizontal direction, that will be v sine theta, right? Because you know that this angle is 90, this is theta, this is 90 minus theta, so this will be theta. So here it will be v cos theta, so it will be v sine theta. So we'll subtract this momentum in the plus x should be equal to the momentum in the minus x direction, right, of this system. So what we get a relationship between m and n goes, so we get a relationship between u and v. So our u becomes, so this problem is now solved. So still we have to get v. So from where we will get this v? तो अब तो क्वेश्चन ये है कि v कहाँ से आ जाएगा? Okay, moving ahead. So we will have a energy conservation in ground frame. So we are in ground frame. We will use energy conservation. So loss in potential energy, because 2mg mass has fallen down through a length, through a height of L sine theta. So loss in potential energy will be 2mg L sine theta. So that will be the gain of kinetic energy of the system, because there is friction is not present, normal is not doing any work, so friction is not present. So there is only the conservative force. We don't have any non-conservative force. So all of this energy will go into the kinetic energy. Let us calculate the kinetic energy of these two particles in the ground frame. This is the way how you should do it. So kinetic energy of bead will be 1/2 of m u square, because its velocity is only in this direction. So it will be, we know that v we got in terms of v, so it will be this. If you calculate it, I have done the calculation here, you can do it. Similarly, the kinetic energy of the particle 2m. Now look, its velocity in ground frame is this velocity plus vectorically this. We don't know where it will be. So, but we know that we have a components. The component of this will be v sine theta. This will be v cos theta, right? So this is v. So if you want to calculate if you don't know the exact velocity vector, if you know the components, you can calculate the energy by adding the energy of the components of the velocities. Okay, so kinetic energy. So you have 1/2 of this 2m, and what is the component of the velocity in x direction? That is v sine theta. Normally it will be going in this direction, minus u. Okay, square plus 1/2 of this. So you have energy scalar, so you have to add 1/2 of this in the y direction, in the vertical direction. So after rearranging them and substituting u, the value of u as we got in terms of v here, 2/3 v sine theta, and this I have simplified this. You can go through, so you can get the kinetic energy of this particle. Okay, moving ahead. Now we'll equate the loss in potential energy to the gain in kinetic energy. This is of the bead, this is of the particle of mass 2m, and I have done the calculations for you. You can see here. So it comes out to be our v square. What we need, it comes out to be this term, right? And we will substitute back it into this equation
the equation which we write for the circular motion here, because from this, because we have to calculate t as a function of this. So we calculated v square in the previous page. All right. So substituting the value of this, the equation is same, t 2t cos square theta minus 2 mg this. So after doing these calculations I have done, t comes out to be equal to this. So t is now your t as a function of theta is this. So you see, look here, if you put theta equal to pi by 2 when bead and these are vertically aligned, so you get tension equal to 14 mg. Now I will tell you one thing. मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि हमारा क्वेश्चन कैसा आता है. क्वेश्चन हमारा normally it will not be calculate t as a function of theta, because that will not be the question. This was for your understanding. What will be the question? Question will be when the bead and this particle 2 mg are vertically aligned, what is the tension in the string? So look here, if we assume its velocity is u and its velocity is v, because it will not have a vertical direction velocity at that time, and it's exactly down. This is going horizontally, this will be going downward. So conservation of momentum, you know, is conserved. Linear momentum is conserved, which was 0. So this must be equal to this. So our u should be equal to 2u. So what is, if we look at this particle from the frame of bead, so that is v relative will be v plus u, that will be it. We will see it moving at a 3v. But the motion, as I told you, will be circular. So t minus 2 mg must be equal to the centripetal force, which comes out to be this. Now v can be calculated by this conservation of energy. 2 mgl is what is the velocity? Again, in the ground frame we are calculating it. It's the u, so that was 2u. So you calculated it and it is v. So you get v square equal to this. Just say it. And substituting this, you can also get the answer t is equal to 14 mg. Now there is a catch. You see, I have not introduced the pseudo force in this direction when we were here in this equation. When we were in this frame. Now see, in this frame, at this moment, there is no component of force acting in the horizontal direction. The t is acting downward, so there is no component of tension acting in this direction. That means at this very instant, when this bead and this mass is vertically aligned, there is no force, net force acting on the system. That means this force at that time is not this bead is not accelerating, because force is 0. So it is in at that time inertial frame. So there will, if there is no acceleration, is 0. So the pseudo force will be 0. So that is why we don't introduce the pseudo force here in the equation, right?